मुझको तो सुना नहीं सर, 1 मिनट। ये बाद में सर बहुत तंग करते हैं ये ऑर्डर्स हमको। अगली डेट में आप कहेंगे सर कि आपने ये सबमिशन दिया था, आई हैव नेवर मेड दिस सबमिशन। सर कैन आई मेक अ प्रेयर? यूपीएससी जब स्टेट इन कंप्लायंस ऑफ द इंटरिम ऑर्डर पास बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट, द यूपीएससी द नेम्स वर फॉरवर्डेड। इतना डायरेक्शन नहीं देंगे सर, अगर एक लाइन उसमें क्लैरिफाई कर देंगे। चैलेंज दैट ऑर्डर। और सर इंटरवेंशन, सर मेरे केस में हाउ कैन इंटरवीनर स्पीक सर इन माय केस? देयर इज नो इंटरवेंशन इन माय केस। सर मेरे केस में मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा कि मेरे केस में कोई इंटरवीनर नहीं है। सर ऐसा नहीं है, अगर केस लिया है सर ऑन रिक्वेस्ट, देन माय लॉर्ड्स, मैं काइंडली ग्रांट मी 2 मिनट्स टाइम। सुन ही रहा था इतनी देर से, उसके बाद आप कहते हैं कि आपको सुना नहीं। नहीं, मुझको तो नहीं सुना आपने सर। मिस्टर अमित सेठ स्टार्टेड स्पीकिंग, आपने उसके बाद ऑर्डर लिखाना चालू कर दिया है सर। व्हाट वी हैव टू से, व्हाट वी नॉट हैव टू से। 108 छूट गया, 108 भी इतना। अरे ठीक है, चलो कोई बात नहीं। Here is my application for grant of interim relief. अब क्या इंटरव्यू रिलीफ मिलेगा? अब तो ये फाइनली सुना जाएगा। Already letter is written by the UPSC. जी। That the another proposal should be sent, removing our names. We both. क्या matter? In spite of the interim order is there. That our date of appointment should be corrected and correctly proposal should be sent. जी। इसको तो फाइनली सुनेंगे ना इसको। ये तो कल उसकी मीटिंग हो जाएगी सिलेक्शन कमेटी। आज कैसे सुन के कर सकते हैं? एटलीस्ट हमारा नाम ना निकाला जाए। हमने इंटरव्यू तो ऑलरेडी है आपके पक्ष में। ये नहीं है ना, हमारा नाम निकालने को बोल दिया उन्होंने। कहाँ है वो ऑर्डर? मालॉर्ड्स में। हाँ बताइए गिल्लियाल साहब। Malords, kindly see, there was already an interim order, and in fact, the final relief was granted to us that we were given the seniority from the due date. That seniority list was corrected, and we have been assigned the correct seniority. Now, my lord, this honorable court, when our names were not forwarded for my lord grant of the IFS, my lord, then we filed the petition. This honorable court passed an interim direction saying that, my lord, subject to outcome of the petition, our names be forwarded. Our names were forwarded. If my lords may have a look on the communication which now the UPSC has issued. जी बताइए। My lords may kindly have a look, my lords. I'm addressing it in annexure P20 in this item 111. विद्या भूषण मिश्रा। Yes. P20. My lords may kindly have a look on page 8. P20 कहाँ पर? P20 से page ये sir application लगी है। Application for grant of. This is for grant of Union of India Party 15915। हाँ बताइए। जी जी जी। इसके साथ में annexure P20 मानो page 8। यूपीएससी को अपने पार्टी नहीं बनाया था क्या? यूपीएससी को अभी नहीं बनाया था, मगर अभी आपने एप्लीकेशन दी है। अरे जब आप चाहते हैं कि आपका इंडक्शन हो आईएफएस, हम स्टेट गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि यू डोंट डिस्कोर माय नेम, माय नेम शुड बी इंटैक्ट एंड शुड बी कंटिन्यू। हां दैट वी वांट। इन नेक्स्ट आइटम यूपीएससी इज ऑल्सो पार्टी। ठीक है, इसमें क्या कहा? अदर केस मतलब यूपीएससी अरे P20 में तो पढ़े क्या कहा? जी, इसमें सर ये P20 में मैं just read it मानो। Sir, I am directed to refer to Government of Madhya Pradesh letter dated 12/11/2022 and 23/11/2022 and to say that it is observed that the names of Srimati Vidya Bhushan Mishra and Shri Rajbendra Mishra, who have been given seniority from 2011 in view of the court orders, have been included in the zone of consideration for the select list of 2021 in pursuance of the Honorable High Court order dated 10/12/2021 in WP number 26990 of 2021. The court has also directed that it is upon the UPSC to take appropriate decision on the fresh proposal sent by the state government. It is further made clear that all these interim arrangements would be provisional and पैरा 2.1 पढ़ लीजिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। In this regard, it is stated that in the case of Shri so 8 years of continuous service चाहिए। आपका जो फीडर कैडर होगा असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। Yes. Yes. You were given seniority with effect from 2011. Yes. When were you appointed? 15. But we have you put in 8 years of continuous service as assistant? It does the seniority by the PSC itself. And the rule says that joining is no. It does not talk about. It does not talk about the physical service.
Otherwise, my lord, if it is taken in this manner that 2015 the actual promotion is granted and that 8 years would count from 2015, then my lord, that grant of seniority becomes odious, my lord. They have relied on some other recruitment rules, and on the basis of that they say that the DOPT has, my lord, what the UPSC is saying, that DOPT has issued a letter wherein they have discussed a case of the police department, and in that case they say that physical service is required. They have not examined our case at all. They only say that the DOPT has issued a letter. PSC has clearly mentioned that we should get the seniority from 2011. And our name is also inserted in the correct place in the seniority list. But they are mentioning the date of joining. 2.2 देख लें सर for a minute. एक मिनट रुक जाइए जी. जी 2.2 2.2 देखें सर. कल है क्या डीपीसी? कल है जी. ये लेटर है सर इनका, तो कल इतना ही कह सकते, अभी सुन तो नहीं सकते फाइनली. या कंसीडर कर लीजिए. मेरी बात तो सुनिए. एंड डिसीजन विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ दिस पिटीशन. सर मेरा एक छोटा सा निवेदन सर करना चाहता हूँ सर. रूल्स ये बोलते हैं कि ऑफिशिएटिंग और सब्सटैंटिव काम करना चाहिए. तो सर स्टेट गवर्नमेंट इसमें सर जो रिट पिटीशन में जो डायरेक्शन था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है इनकी 2011 से सेवा गणना करके भेज दे, स्टेट गवर्नमेंट ने भेज दिया. अब यूपीएससी ने रिजेक्ट कर दिया. और दिस ऑर्डर में लॉर्ड इसका क्वैशमेंट नहीं मांगा दीक्षित साहब ने, सिर्फ स्टे मांगा है इसका. पहली चीज तो सर इसको अगर चैलेंज करना है तो ओरिजिनल कोर्ट कैट होगी सर. मेरा पहला निवेदन यह है कि मेंटेनेबिलिटी का इशू है. दूसरा हमारा कहना यह है सर कि सीनियरिटी से आपका कैडर में जन्म नहीं होता. दिस इज अ कवर्ड मैटर मिलॉर्ड. आई हैव गॉट अ डायरेक्ट जजमेंट मिलॉर्ड. देन व्हेन द वर्ड इज यूज्ड ऑफिशिएटिंग और रेगुलर सर्विस, देन रिट्रोस्पेक्टिव सीनियरिटी कैन नॉट गिव यू द एक्सपीरियंस ऑफ दैट सर्विस मिलॉर्ड. सो दिस इज टोटली मिसिंग इन दिस केस. 2015 में इनको ऑर्डर हुआ, इनको भूत लक्ष्य प्रभाव से सीनियरिटी दे दी, पे स्केल दे दिया, सब. इन्होंने कभी उसको चुनौती नहीं दी. अरे एक मिनट, ऐसा मत करिए आप जी. अब हमारा सर आज की डेट में निवेदन है कि पहली चीज सर, इंट इज ऑलवेज इन द एड ऑफ फाइनल रिलीज. और दिस ऑर्डर दे हैव नॉट चैलेंज, दे हैव नॉट सॉट क्वैशमेंट. ये स्टेट ने इंटरिम ऑर्डर का कंप्लायंस कर दिया, यूपीएससी को भेज दिया. अब इन्होंने इसमें अमेंडमेंट एप्लीकेशन कब की है? मेरी एप्लीकेशन है सर ये, दिस इज फाइल्ड ऑन जी 5/12/2022. दिस इज आईए नंबर 58. फर्स्ट 12 में, फर्स्ट केस में नहीं है. हाँ, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में जी. ये 158. और अगर ये अलाउ भी हो गया तो वो कैट जाना पड़ेगा. मेरा इतना ही निवेदन सर. मैं इनका जवाब दे दूं सर जी. What my friend is saying, my friend is talking about the general principle. It's a case where the state had not assigned as the correct seniority. That matter was adjudicated upon. It's not a case that I was not born in the cadre and therefore my seniority cannot be counted. That principle would not apply in a case where the state has not granted. And firstly, my friend, who the state has already conceded I am to for that intervener. I am not for state. No, I am for intervener will do here. You have claimed seniority. Is the Yes, his prayer is, my lord. Intervener is speaking, without them. I have not received any copy of intervention. I am not filed. So in that case, we have now the submission is, my lords, at the moment we are also saying, my lord, that my lords they let them consider our cases and result may not be declared. Let them keep our result in. Yes. ठीक है, इतना कर देते हैं. Learned seniors petition also, no order of UPSC is under challenge, my lord. ठीक. In my case it is. कॉपी कहाँ सर आपके इसमें कहीं नहीं? आप नहीं है. मैंने देखिए ना, मेरा रिलीफ देखिए 29/11 का मैंने ये लेटर चैलेंज किया है. कहाँ है वो बताइए सर. ये मेरा नहीं. मालर्स में काइंडली है. मालर्स में है बोलो. यूपीएससी को पार्टी नहीं बनाया तो यूपीएससी के खिलाफ कैसे रिलीफ मिलेगा सर? मालर्स में है बोलो. यूपीएससी से रिलीफ नहीं चाहिए. ठीक है, तो आप उसी को मांग रहे हैं. यूपीएससी से रिलीफ नहीं चाहिए तो कैसे होगा भाई? तो सरकार से रिलीफ चाहिए कि हमारा नाम उसे वो करेक्ट उसमें भेजे, फिर से हमारा नाम उसमें से अलग. यूपीएससी भले कंसीडर ना करे.
लिख देते हैं, इतना कर देते, सरकार नाम भेजेगी एंड सिंस यूपीएससी इज नॉट अ पार्टी इट विल बी फ्री टू डिसाइड द केस. But UPSC is their party, Manoj, and I have also filed an application for pleading the UPSC as a party. आज उसको इम्प्लीट तो करने दीजिए, उनको इम्प्लीट तो हो जाने दीजिए. कर देते हैं आप अगर हमको आगे दें. Manoj, may please have a look on this. आइए Manoj, 15864 15864 15864 क्या है ये? ये this is 5/12/2022 application for amendment. I'm sorry, Manoj. In this It has not been given to us, इसकी Manoj. कॉपी नहीं दी आपने. Sir, आप किसके लिए आ रहे हैं मिस्टर? I'm for UPSC, Manoj. जी, कॉपी क्यों नहीं दी आपने इसकी? UPSC या आपसे कुछ चाहते ही नहीं है ना? हाँ ठीक है. नहीं सर ऐसा नहीं है. सर मेरे केस में सर मेरे केस में यूपीएससी इज अ पार्टी. मेरे केस में यूपीएससी. लेकिन आपने कॉपी क्यों नहीं दी इसकी एप्लीकेशन की? सर कॉपी दे देता हूँ. मुझे लगता है मैं चेक कर लेता हूँ. कॉपी क्यों नहीं है? पावती ही नहीं है सर. हो सकता है सर, मैं ये उस बात को डिस्प्यूट नहीं करूंगा. मेरा सबमिशन आज सिर्फ इतना है सर. माय लॉर्ड्स, में काइंडली डायरेक्ट देम टू माय लॉर्ड्स. This today these cases are listed. The controversy revolves around communication made by UPSC dated 29/11/2022 19/11/2022 as contained in Annexure P20 in WP 26990/2021, whereby Union Public Service Commission has stated that since petitioners had not completed 8 years of actual service in the feeder cadre, and therefore as per the third proviso to regulation 5 within bracket 2 of the Indian Forest Service bracket में appointment by promotion bracket close regulations comma 1966 provides that the committee shall not, ये कोट कर दीजिए, पेज 8 पर है, फ्लैग लगा देता हूँ, पिंक कलर का फ्लैग लगा दीजिए, इतना है. नेक्स्ट फ्लैग, उसके ऊपर पहले इनकी ये अलाउ कर देना the implead UPSC को, और he may carry out the correction during the course of the day. Yes. Next, since the petitioner's contention is that since state has corrected their seniority and given them seniority with effect from 2011, their names cannot be deleted from the zone of consideration, and it is for the public UPSC to consider and decide their names in accordance with rules and regulations. Full stop. Shri Amit Seth, learned counsel for the intervener, on the other hand, along with Shri Anup Nair appearing for UPSC, submits that. Milord, I'm also for intervener, Milord. My IN number is. ठीक है. There are 4 interveners. इनका भी नाम डाल दीजिए. Submits that petitioners have since not put in 8 years of actual service, continuous service, whether officiating or substantive in the post, therefore included in the State Forest Service, therefore they are not entitled for promotion to the post of to the cadre of IFS. Next, Shri Amit Seth places reliance on the judgment of Supreme Court in लीजिएगा. Para 15 and 16. In Union of India and others versus M. Bhaskar and others, 1996, bracket 4 SCC 416, wherein in para 15 it is observed as under. Next para. After hearing learned counsel for the parties and going through the records, the only controversy at present is that petitioners are claiming a relief that since they fulfill the requirement, at least their names be forwarded to the screening committee एक चीज for considering their ये name. काम रिटर्न किया है सर. स्टेट ने तो इंटरिम ऑर्डर की कंप्लायंस में भेज ही दिया था. ठीक है भाई. And UPSC be directed to consider the name of the petitioners in accordance with law. Full stop. This innocuous prayer is though opposed by Shri Amit Seth, and he submits learned counsel for the intervener, and he submits that firstly order annexure P20 is to be challenged by filing OA before the Central Administrative Tribunal. Secondly,
state had forwarded the names to the UPSC and UPSC has returned those names in accordance with the regulations made in this behalf. Therefore, no useful purpose is going to be served. Full stop. Next para. Since there is already an order of the coordinate bench by which interim orders have been granted, for the present it is suffice to say that since interim orders of the coordinate bench dated 10/12/2021 are invoked, they shall continue to have the operation and UPSC will be free to decide the case on its own merits. Sir, can I make a prayer? Malords में हाँ इतना डायरेक्शन नहीं देंगे आपका वो इंटरिम ऑर्डर विल कंटिन्यू सर उसका इम्प्लीकेशन ही ये है कि आपका नाम कंसीडर किया जाएगा मगर वो तो नहीं कर रहे हैं सर अगर एक लाइन उसमें क्लैरिफाई कर देंगे चैलेंज दैट ऑर्डर चैलेंज किया सर मैंने तो चैलेंज किया सर मैंने चैलेज किया 29/11 का ऑर्डर मैंने मालूट्स में कैंडली इंटरिम ऑर्डर शैल कंटिन्यू उसकी लाइन इसमें एक लाइन क्लियर कर दीजिए एंड in the light of the interim orders, all the actions are required to be taken by the concerned authorities. Yes, subject to outcome, Malord. बस और उसके आगे कुछ भी नहीं छोड़ दीजिए कुछ नहीं जोड़ नहीं उसका सर रीजन ये है क्योंकि इंट्रीम ऑर्डर के बाद तो यूपीएससी ने उसको वापस टाइम हो गया अभी ये इंटरवीनर की एप्लीकेशन भी अलाउ नहीं और सर इंटरवेंशन सर मेरे केस में हाउ कैन इंटरवीनर स्पीक सर इन माय केस देयर इज नो इंटरवेंशन इन माय केस मेरा सबमिशन पर्पस फॉर इंटरव्यू and who are there to intervene? ये हमारा झगड़ा इनसे है ही नहीं है हमारा झगड़ा सरकार उसमें लिख दीजिएगा that Shri D.K. Dixit and K.C. Gildyal submit that they have no dispute with the interview. सर मेरे केस में मैंने कुछ नहीं कहा मैंने सिर्फ इतना कहा कि मेरे केस में कोई इंटरवीनर नहीं है हाँ क्या D.K. Dixit submit ये बाद में सर बहुत तंग करते हैं ये ऑर्डर्स हमको अगली डेट में आप कहेंगे सर कि आपने ये सबमिशन दिया था आई हैव नेवर मेड दिस सबमिशन और सर दूसरा आपने मुझको तो सुना नहीं सर एक मिनट मेरा हम्बल सबमिशन ये है सर करते हैं 4:30 बजे सर मेरा सर ऐसा नहीं है अगर केस लिया है सर ऑन रिक्वेस्ट देन मालूट्स में काइंडली ग्रांट मी 2 minutes टाइम नहीं आपने ये कहा मिस्टर सेठ हैज सेड समथिंग मालूम दिस इज नॉट बिफिटिंग सुन ही रहा था इतनी देर से उसके बाद आप कहते हैं कि आपको सुना नहीं मुझको तो नहीं सुना आपने सर मैं तो मिस्टर अमित सेठ स्टार्टेड स्पीकिंग आपने उसके बाद ऑर्डर लिखाना चालू कर दिया सर इट्स नॉट दैट वी कीप मालूम दैट इन माइंड व्हाट वी हैव टू से व्हाट वी नॉट हैव टू से बट माय सबमिशन इज अलग-अलग इसको डीके दीक्षित साहब में ऑर्डर करिएगा और इसमें लिख दीजिएगा श्री डीके दीक्षित सबमिट्स दैट Shri Amit interveners have no stake in the matter and yes, their dispute is strictly with the state government and they are not claiming any relief against the interveners. चलिए अब आप बताइए आपका अलग से लिखाता हूँ मेरे केस में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि there is no intervention firstly in my case सेकेंडली सर मेरा सबमिशन ये है कि यूपीएससी जब स्टेट इन कंप्लायंस ऑफ द इंटरिम ऑर्डर पास बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट द यूपीएससी द नेम्स वर फॉरवर्डेड यूपीएससी सेंट दोज नेम्स बैक then we have filed this application that the challenging that order passed by UPSC dated 29/11 we have filed this amendment application so my submission is this my lords have passed the interim order I am only praying for that a further sentence may kindly be made that the state my lords have said that the interim order will continue now in furtherance to that my lord that they may consider our cases that's all I am already कह दिया है कंसिडरेशन के लिए मैं कह रहा था सर जो इंटरिम ऑर्डर है वही होगा मैलॉर्ड उन्होंने लिख दिया कि रिवाइज टू लिस्ट भेजिए उन्होंने बोल दिया सर इसलिए उन्होंने बोला होगा स्टेट गवर्नमेंट तो बाउंड है ना इस इंटरिम ऑर्डर से वो छोड़ना है स्टेट तो भेज चुका ना सर पहले भेज चुका तो वो कंसीडर करेंगे उन्होंने वापस कर दिया सर स्टेट के they have not respected the court order then objection with regard to jurisdiction is the 14(1) वो आएगा honorable court has got the jurisdiction over the UPSC it is the act यूपीएससी तो पार्टी बनाया है आपने हम बना दिया ना आपने अभी बना दिया it goes to बना दिया ओए मतलब अभी बना दिया and there is malad if the alternate remedy is no bar हाँ ठीक है ये बात लिख देंगे और वो सर वो फाइनल में डिसाइड होगा ये सब इश्यूज फाइनल में डिसाइड होंगे what senior is seeking to amend copies number how can I even address on that point which Madhya senior is trying to now उसमें ये भी लिख दीजिएगा that copy of the amendment is not supplied to the council for UPSC let copy of the सब काट दीजिएगा copy of the amendment application be supplied to UPSC council he may file his reply by within 3 days list thereafter my lords that order earlier which has been passed in my case नहीं अब remaining case list next week कर देंगे चलिए